नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी। शुरू करेंगे विद सैमसंग S23। उनका बेस और अल्ट्रा वर्जन ऑफ द S23 फोन आ चुका है। पहली बार दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 उन्होंने उस पर यूज किया है। आज हम लोग ने आपको एक स्लैपर टेस्ट दिखाएंगे, एन अमेजिंग टॉर्चर टेस्ट। जो टॉर्चर टेस्ट हम करेंगे ना, दिस इज वेरी वेरी टफ ऑन ग्लास। एक कंपेटिटर का ग्लास लगाएंगे एंड यू विल सी व्हाट हैपेंस टू दैट वर्सेस द कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। फिर चलेंगे टुवर्ड्स अ वेरी वेरी फेमस कोलकॉम सेगमेंट। गेम डेवलपर हुओगो से बात करेंगे। ये ना गेम डेवलप करते हैं फॉर एंड्रॉइड फोन्स, और पहले इनकी प्रॉब्लम होती थी कि दे कुड ओनली डेवलप गेम्स लेस देन 20 MB, और अब दे आर एबल टू डेवलप गेम्स ऑफ मोर देन इवन 1 GB, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर ऑफ फोन्स, द काइंड ऑफ फीचर्स दैट आर कमिंग इन, इसीलिए आजकल जो फोन की गेम्स हैं दे आर एज गुड एज कंसोल एंड पीसी गेम्स। शुरू करते हैं। आज की टॉप स्टोरी है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा एंड उनका जो बेस वर्जन है उनके साथ शुरू करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन स्टोरी है एंड दैट इज के कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो इस फोन में फ्रंट एंड बैक है, ये पहले फोन है पूरी दुनिया में विद दैट, और कहते हैं दिस इज द टफेस्ट ग्लास इन द वर्ल्ड। तो उसको टेस्ट करेंगे। तो पहले लेट्स टेक अ क्विक लुक एट बोथ फोन्स। सैमसंग ने इस साल गैलेक्सी S सीरीज में नए फोन्स लॉन्च किए हैं और ये फोन्स अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल हैं। हमेशा की तरह सैमसंग ने अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग दाम पर रिलीज किया है। आइए देखते हैं S23 और S23 अल्ट्रा में क्या फर्क है। S23 6.1 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। अल्ट्रा में थोड़ी बड़ी 6.8 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। दोनों में ही दमदार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। जहां सबसे ज्यादा फर्क है वो है कैमरा। अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, वहीं S23 में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा दिया गया है। साथ ही अल्ट्रा के साथ आपको S Pen भी मिलता है, लेकिन S23 के लिए आपको ये अलग से खरीदना पड़ता है। अब दोनों फोन्स की कीमत के बारे में जान लेते हैं। S23 आपको 79,999 रुपए में मिल जाएगा, वहीं अल्ट्रा की कीमत 1,24,999 रुपए है। दोनों ही फोन्स आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही फोन्स अपने आप में गेम चेंजर्स हैं। अब आपको फोन दिखा दिया, अब जरा टॉर्चर करते हैं इन फोन्स को। तो जॉन बेन जो कॉर्निंग से USA से आए थे, यहाँ पे मेरे को मिले यहाँ पे दिल्ली में, और उन्होंने मेरे को बताया कि एक स्लैपर टेस्ट दिखाएंगे। स्लैपर टेस्ट इज वेरी वेरी हार्ड ऑन ग्लास, ऑलमोस्ट सारा ग्लास टूट जाता है। उन्होंने एक कंपेटिटर का ग्लास डाला एंड देन ही स्लैप्ड द ग्लास हार्ड। आइए देखते हैं। Test it many different ways. This is called a slapper demo. We have a competing glass here, and the energy in this rotational experiment called the slapper is about dropping from knee height, and we want to replicate a surface such as asphalt, so we use 180 grit sandpaper, so you can feel that, the coarseness there. Okay. So this replicates dropping a phone from about knee height onto asphalt, and nothing you want to see on your phone, you don't want it to break. Now, so Victus 2 is so good. Not only do we go higher with the rotation on the slapper. So this is what is on the Samsung S23, right? So you've gone what? 3 times, 5 times higher? This replicate a drop from maybe hip height. Okay, so more energy, but also we went to a more aggressive surface. This 80 grit sandpaper is meant to replicate concrete, which is much more demanding than asphalt. You can feel the difference there, right? Absolutely. So we'll go ahead and see how Victus 2 performs. Nobody wants to hear that sound. No one. And it survived. But everyone wants to see that after that sound, Yes. huh? It's epic. Yes. सेलगुर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे, so much more to show you. आइए चलते हैं हम अपने वेरी वेरी फेमस कोलकॉम सेगमेंट में, और आज एक गेम डेवलपर से मिलेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि जो मोबाइल फ़ोन की गेम्स है दे आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि अब जो हमारी मोबाइल फ़ोन की गेम्स हैं दे आर एज गुड एज कंसोल एंड पीसी गेम्स। तो हम लोग यहाँ पे कैसे आए, क्या ये जर्नी थी हमारी? तो प्रोसेसर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन गेम प्ले। चाहे आप गेम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे आप टेस्ट कर रहे हैं, एक स्लो प्रोसेसर कैन कंप्लीटली अफेक्ट द गेम प्ले। तो हम लोग जिस मेच्योरिटी पे पहुंचे हैं अब with the kind of smartphone games that we have, we're going to find out how we did it और processor कितना important था for this to happen.
आपने देखा है मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है इंडिया में पिछले कुछ सालों में. इट हैज सीन क्रेजी ग्रोथ. एक रिपोर्ट निकली है कि इंडिया जो है नाउ होम टू नियरली 420 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स. सोचिए उस नंबर के बारे में, राइट. और गेमिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर बन गई बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन अब बहुत अच्छा हो गया है, राइज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द पैंडेमिक. एक और रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आया. एवरेज टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल गेमिंग पोस्ट कोविड जो है अब 4.6 आवर्स पर वीक है. ये कंपेयर करिए आप 3.5 आवर्स था प्री कोविड. अब आप सोच रहे होंगे यार ये गेमिंग शेमिंग तो बहुत अच्छा है, मैं खेल लेता हूँ, लेकिन गेम बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता होगा. लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा इट इज़ नो लॉन्गर हार्ड टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ गेम. मोबाइल गेम डेवलपमेंट जो है बहुत पॉपुलर बन गया है बिकॉज ऑलमोस्ट एनीवन कैन नाउ क्रिएट एंड डिज़ाइन अ मोबाइल गेम ऑफ देयर ओन. लो कॉस्ट डेवलपमेंट है, ऐप स्टोर जो है पब्लिशिंग ऐप्स के साथ बहुत आसान हो गया है. गेम डेवलपमेंट जो है अब एक बहुत ही अनबिलीवेबल फार फ्लंग ड्रीम नहीं है. और जो ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी है इसके साथ फैसिलिटेट हुआ है पुश फॉर डेवलपर्स टू बी एबल टू मीट देयर पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी. इसके साथ अब मोबाइल ऐप इंडस्ट्री जो है लगता है कि अभी जहाँ पे है टू लीप फ्रॉग इनटू अ कंप्लीटली न्यू लेवल. आज हम लोग मिलेंगे कार्तिक से और उनसे पता करेंगे कि स्मार्टफोन्स ने कैसे हेल्प किया उनको टू एक्चुअली रीच हिज ड्रीम. भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि 2025 तक गेमिंग उद्योग में 3 गुना इजाफा होकर उसका मूल्य करीब 3.9 अरब डॉलर हो जाएगा. जो गेमिंग डेवलपमेंट कंपनियां दुनिया के बाजार में अपना दबदबा बना रही हैं, उनमें से एक है हुएगो स्टूडियोज. ये 2D और 3D आर्ट और डिजाइन आउटसोर्सिंग सेवाओं में काम करते हैं. 10 साल से ज्यादा समय तक गेमिंग के क्षेत्र में राज करने वाली कंपनी 50 से ज्यादा गेम्स बना चुकी है, जिसमें से 15 गेम्स 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किए जा चुके हैं. हुएगो स्टूडियोज में आज 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं. We are the biggest market in terms of downloads. Yes, we are not the biggest in terms of revenue, but we are the number one in terms of the downloads. कंपनी की शुरुआत तब हुई जब एक ग्राहक ने ऑनलाइन गेम बनाने को कहा. गेम तैयार होने के बाद कोकोस 2D गेम इंजन के व्यापक इस्तेमाल से हुएगो स्टूडियोज को एहसास हुआ कि गेमिंग बाजार में काफी गुंजाइश है. People were not okay to download a game which is more than 20 MB. I have developed games which are less than 20 MB. I worked with certain messenger apps where our intention is to build a game which are in less than 5 MB. So that sort of a game was something that we were doing it earlier. Now what you see is the average user consumption of data is around 7 GB per month. Okay, that's a huge spike in terms of what you were seeing earlier. Now the users are open to download a game which has 100 MB of file or maybe 1 GB of file. That's all. हुएगो स्टूडियोज गेमिंग जगत में जादू जगा रहा है. कला, डिजाइन, एनिमेशन, 2D और 3D सबके संगम के साथ टीम नई टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क के इस्तेमाल से नए तरह के गेम्स बना रही है. गेम बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुएगो स्टूडियोज ने ग्राहकों की मांग बदलती हुई देखी है. पहले जिस तरह के गेम्स डाउनलोड किए जाते थे और अब जिस तरह के गेम्स डाउनलोड किए जा रहे हैं. It comes down like this. Like if you look into China market, they are mostly driven by these are PC gamers who are transitioned into mobile space. Whereas if you look into Indian market, these are hardcore mobile gamers, right? In the West, they won't call mobile gamers as a hardcore gamers, but that's the fact in India because what the mass market got adopted to gaming is through mobile platform. So that's the 101 for us. Second comes in terms of process support. That is very important because I'm getting exposed to an ecosystem which has some fun elements in it or some entertainment elements in it, which has to support me in terms of whatever elements I want to do within that ecosystem. And now the process plays a huge role. Again, if you look into earlier when we were collaborating with MPL kind of folks for some game development, these times we have been building some games like runner games, bubble shooter games, fruit chop kind of games. These are something that we are focused earlier. But what we are currently collaborating, right, with not just MPL, I would say with other folks as well, where we have been pushed towards a market where people have been used to these set of games, like these set of simple games. Now they have matured from that stage, and their preference has also matured. So they are expecting something to be played like a battle royale game,
where multiplayers are there. They are going to fight against each other. Fist fighting game, probably a tradable card game. So these are something that they are expecting. So that's also is a healthy sign for an Indian audience. कार्तिक का कहना है कि प्रोसेसर की गेम्स विकसित करने में एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। आखिर ये प्रोसेसर ही तो है जो गेम्स को बेरोक टोक चलने में मदद करता है। What Snapdragon has helped us is, it gives us more benchmark, I would say more lead time in terms of having this moment where the user or the phone gets heated up and it starts reducing the performance to an extent. I guess even a device with say 10 to 15K have better performances now. So it gives me as a developer to build a game where I can give a visual to the user, like in the graphics and on the renders, that they can play for a longer time, like 2x compared to the older versions, right, or 3 to 4 years before. And for the gamer, it's also happy. He's also happy, like he's having fun in an environment which is supposed to be the environment he's supposed to be playing, right? So that's a win-win for all. गेम बनने के बाद सबको फोन्स पर टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि वो कैसे चलते हैं। ये जांच कई पैमाने पर होती है। We pay very close attention to these two primary parameters, gameplay and device. Sometimes performance issue can affect the gameplay. In a way, it also because of the battery drain, right? Or it can drain the battery. So what happens if a battery drains? When a battery drains, it generates heats. We call it as thermal throttling, and in a way, a processor or the device triggers this event and it reduces the game performance. You might see some latency issues, some lagging in the game, and it tend to cool down the system. Like the main objective is to cool down the heat the device had. भारत और अमेरिका में स्टूडियो और मुख्यालय और कुवैत, मियामी, लंदन और बेंगलुरु में शाखाएं हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ टीम अब तक 500 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम कर चुकी है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में धूम मचाए हुए है और लोगों की नौकरी पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। गेमिंग सेक्टर एक ऐसा मैदान है जिसमें आप जा सकते हैं क्योंकि इसमें तेजी से बढ़त हो रही है और ये आगे भी होती रहेगी। Let's go! Congratulations and welcome to the show. कार्तिक, शुरू में of course I need to find out कि आपने कैसे सोचा that you start developing games? Yes, so it was almost 11 years before. At the time, Facebook gaming was the biggest thing. Like not mobile was not in the scene. So we got an opportunity to collaborate with a Singapore-based company who wants to publish a train-based educational game. So we developed that. So that was my first exposure to games. As in Huego, my studio now. So we got into games through two publishers. One is Bacchus, another is Chris Miller. These folks are from US. They both are veterans in gaming space. So they were building kids educational games or kids entertainment games, like Old MacDonald had the form, kind of drag and drop single gesture games. So we collaborated with them and built probably around 10-15 games for them, exclusively for kids market, and that's how we got into gaming industry. Wow, great tips. और कितना important है एक processor of a phone to handle graphic heavy games and for game developers like you? Almost 5 years before, right? So these are the times where we build games which are like 2D side-scrolling games. I worked with Chota Beam IPs and other IPs, but these games are very minimalistic games. These games had 20 MB of size because the user didn't had a matured hardware to process these games. So we tend to work on games which are less process driven. Whereas if you look into it now, the users are matured. Like some of the folks have phones which are powerful than laptops there, right? It has 8 to 16 gigs of RAM that can process things. So now we are looking into games which are multiplayer, which has synchronous gameplay, which has chat system in it, probably an audio chat in it, and these. So processor plays a immense role in terms of attracting Gen Z and the new set of audience.
थैंक यू कार्तिक एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। स्नैपड्रैगन आमंत्रित कर रहा है आप सेल गुरु फैंस को टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। ये आपको एक्सेस देगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस देगा आपको टू कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड सो मच मोर। अब मैं तो स्नैपड्रैगन इनसाइडर काफी टाइम से बना हुआ हूं, लेकिन यू कैन नाउ सिंपली बिकम अ स्नैपड्रैगन इनसाइडर मेंबर ऑल्सो। सिर्फ स्नैपड्रैगन को आप फॉलो करिए ऑन देयर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट और आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है अब टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। जाइए ndtv.com/unleash your dreams। बेस्ट ऑफ लक। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन याद रखें अगले हफ्ते से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है। जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना, दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट विल बी कमिंग ऑल ईयर दिस ईयर। तो दिस इज द फ्यूचर राइट नाउ, ओनली ऑन द सेल गुरु शो।